Hey guys, this is Kyle and welcome to this beautiful episode of Technical Saturday series। और आज के इस एपिसोड से यानी कि आज से इन द सेंस अगले 5 एपिसोड तक हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ वी कैन बी अ हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर। बिकॉज एज टोनी रॉबिन्स सेज, सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। एंड ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर वीडियो से पहले जो भी हमने वीडियोस में डिस्कशन किया है बेस्ड ऑन एनी ऑफ द टेक्निकल टॉपिक्स, वेदर इट इज आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, 7 स्टेप प्रोसेस, अगर हमने उसका प्रॉपरली एनालिसिस भी किया था, दैट्स ऑल अबाउट टेक्निकल पॉइंट्स। बट फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स मैं आपको 5 वीडियोस की मदद से आपको ये समझाऊंगा कि हाउ यू कैन बिकम अ हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर। बिकॉज आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी ड्यूरिंग योर ओन ट्रेडिंग जर्नी इटसेल्फ, लाइक अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में हो देन यू माइट हैव नोटिस दिस वन सिंगल थिंग कि जितने भी टूल्स और इंडिकेटर्स आप यूज कर लो, जब तक आप अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करते हो इट्स नॉट गोना मेक सेंस, राइट। और अगर आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो देन इट वुड बी माई strong and simple suggestion to you that you should primarily focus upon working upon your mindset। क्योंकि अगर आपने mindset पे work कर लिया, whether you want to do trading or not, it's completely up to you। but अगर आप जो कोई भी profession pursue कर रहे हो, whether it is job, entrepreneurship, business or freelancing or any other thing as well, वो mindset आपकी help करेगा ताकि you can think big और साथ ही साथ you can take small actions in order to achieve the bigger results into your life। और उसी के साथ एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये 5 वीडियोस होने वाले हैं वन बाय वन इनटू दिस पर्टिकुलर सीरीज इटसेल्फ। मैं एक एक चीज शेयर करूंगा सो दैट यू कैन गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ऑल्दो वीडियो स्मॉल होने वाले हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस, बट डेफिनेटली जो भी वैल्यू आई एम गोना प्रोवाइड इनटू दिस पर्टिकुलर सीरीज दैट इज गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दोज टेक्निकल पॉइंट्स। So with that, let me quickly share with you the screen of what we are going to discuss today. So as I've already mentioned कि हम लोग discussion करने वाले हैं based on who is a high performance trader, because everybody wants to become a trader। लिसन टू दिस केयरफुली, हर किसी को ट्रेडर बनना है, बट वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोज आर कॉल्ड एज हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर्स। व्हाई? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में ही दिखने लग जाता है कि यस, दीज आर द पीपल दोज हु आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट। एंड अल्टीमेटली जब भी हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं, अल्टीमेटली वी गेन प्रॉफिट्स एंड ऑल। So for this particular series sake, I'm going to give you 5 C's which are going to help you give the absolute clarity about what are those 5 pillars, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर बन सको, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर की जर्नी में अपना फर्स्ट स्टेप रख सको। एंड द फर्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज नथिंग बट clarity, which means you should have absolute clarity about what kind of trader or investor you want to become। Although मैं अपनी community में ये एक example भी देता हूँ, let me come to the full screen। मैं अपनी community में हर session के वक्त ये एक you can consider ये एक example देता हूँ during we have our inner circle mastermind, जिसमें मैं ये चीज mention करता हूँ that you should have absolute clarity about who you are as a person, what is your current profession। because let's consider अगर आप job कर रहे हो, business कर रहे हो, entrepreneurship कर रहे हो, based on your time availability, based on your money, the capital which you can allocate, and based on the systems which you can learn, the systems which you can allocate, you should decide कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। क्योंकि काफी सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, जो कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हैं, और उनको लगता है कि यार मुझे डे ट्रेडिंग करना है, मुझे बीटीएसटी ट्रेडिंग करना है, लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में गेन्स करने हैं एंड ऑल। बट द पॉइंट इज माय फ्रेंड, इफ यू आर फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म गेन देन यू आर मिसिंग ऑन द बिगर पिक्चर। क्योंकि आप खुद यू कैन कंसिडर कॉमन सेंस वाली चीज है, अगर आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शांति से लाइक विद कूल एंड काम माइंडसेट अगर आप ये सोचें कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए इतना टाइम एलोकेट कर सकता हूँ कि मैं स्क्रीन के सामने आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के मैं रिजल्ट जनरेट करूँ? इफ द आंसर इज yes, then you should definitely go for it। but if the answer is no, then my suggestion would be that if you want to do trading, then you can jump into swing trading or maybe semi positional or positional trading or sometimes investing as well। बिकॉज इवन दिस इज वन ऑफ आर फोर्टे इन आर कम्युनिटी कि मैं खुद लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड नेवर बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर फ्रॉम डे वन। फर्स्ट यू शुड लर्न अबाउट द स्किल, आप इस स्किल को सीखो, आप इस स्किल को पहचानो कि मैं कौन से टाइप का ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकता हूँ। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग आप कैपिटल एलोकेट करो, इट कुड बी फ्रॉम एनीवेयर, and it could be through your own job, it could be through your own business journey, it could be through your own entrepreneurship journey, or maybe आपके savings account में है and you want to just withdraw that and use in the form of trading capital, it could be any amount, right? So the main point is that
you should first build trading as a parallel source of income, and then once you have built a strong foundation, अगर आपको लगता है कि यार जितना भी मैं रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ that is literally more than enough for me to survive and to live a very good lifestyle, तो आप उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड देन you can become a full-time trader, right? But what a lot of people do is nowadays, like after you can consider after COVID, a lot of people think that कि job वगैरह नहीं मिल रहा है, I don't want to do any kind of business or entrepreneurship. Right now, I want to become a full-time trader. But initially, during the first 90 days or maybe 100 days, they lose their trading capital just because of not having proper knowledge or path. And ultimately, they lose out the faith from trading and investing. So that should not be the scenario. That is why I'm suggesting that first you should create it in the form of parallel source of income, and then you can create it in the form of primary source of income, right? And let's get back to the point as I mentioned about the clarity. So this is the one of the example which I mention in all my community calls, is that you should have absolute clarity about what kind of profession you are right now, based on which you will be able to decide कि यार मैं कौन सी टाइप का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, whether it is short term trading, which is primarily not you can consider not a recommendation from my side कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, बाय सेल विद इन अ डे, दैट्स नॉट माय रिकमेंडेशन. यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग, सेमी पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड देन यू कैन गो फॉर इन्वेस्टिंग एज वेल. ताकि लाइक फर्स्ट यू गॉट द क्लैरिटी कि यार मेरा करंट प्रोफेशन क्या है, मैं कितना टाइम एलोकेट कर सकता हूँ, जिसके चलते यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मैं कौन सी टाइप का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, जिसके बेसिस पे यू विल गेट द क्लैरिटी. अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा सिस्टम, कौन सा स्ट्रैटेजी लर्न करना है, मुझे कौन सा टूल इंडिकेटर लर्न करना है, ताकि मैं स्विंग ट्रेडिंग को मास्टर कर सकूं, ताकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को मास्टर कर सकूं, राइट? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक यार मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लिया, ऑल्दो दैट इज नॉट माई फोटे. बट व्हाट लॉट ऑफ पीपल थिंक इज कि अगर मैंने टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लिया तो मैं कोई भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ. बट द आंसर इज एब्सोल्युटली नो. जो भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यू वांट टू डू, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग लाइक स्विंग ट्रेडिंग, सेमी पोजिशनल ट्रेडिंग, और इवन इफ इट्स पोजिशनल ट्रेडिंग, हर किसी हर किसी टाइप का जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है, इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंडसेट, it requires different type of capital allocation and many more things, right? So the first thing which I mentioned, the first thing that is you should have absolute clarity about what it takes and what kind of trader or investor you want to become based on what is your current profession, right? So I hope that you have got immense value and clarity from this particular video as well. And from upcoming videos, I'm gonna open up one more C, that is, as of now I'll keep it secret, but in next 4 parts I'm going to share those, as I've already mentioned. This is going to be 5-part video series. So first video mein we have already discussed about the first C, that is clarity, and I hope that you have got immense clarity that what kind of trader or investor you can become based on your current profession. And make sure you comment below this particular video about what kind of trader or investor you can become based on your current profession, and I'll see you in the next video. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.